अध्यक्ष प्रबंध निदेशक एवं निदेशक मंडल एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी इनका स्वागत करें। ध्वजारोहण संपन्न। सभी से निवेदन के अपने अपने स्थान पर कॉर्पोरेट गेट हेतु खड़े हो जाएं। हमारे मिले कदम, हमारा चौड़ा सीना, विशाल कंधे हमारे, हाथ फौलाद हमारे। हम हैं आग, हम हैं बिजली, हम हैं शक्ति की खान, हम हैं कोल इंडिया, कोल इंडिया हम। अंधेरे से खोद लाते हम उजाले खुशियों के, चट्टाने फोड़ जुटाते हम ईंधन लाखों के। हम हैं कोल इंडिया, कोल इंडिया हम। कदम मिले चले ताल मिलाकर, साथ पकड़ कर बाहें हम लाए काला हीरा, हमसे उज्जवल देश की राहें। हम हैं आग, हम हैं बिजली, हम एकता की खान, हम हैं कोल इंडिया, कोल इंडिया हम। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि आज के इस स्थापना दिवस के आदरणीय डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा साहब, निदेशक मंडल, मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं आप सभी कर्मचारी अधिकारियों को आज इस 39वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं। मेरा निवेदन है श्रीवास्तव साहब से कि सर दीप प्रज्वलन करने हेतु दीप प्रज्वलन प्रारंभ किया जाएगा। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जाएगी। एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों हुआ पदार्पण है, एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों हुआ पदार्पण है। ज्योत से ज्योत सजी, सज गया एसईसीएल का प्रांगण है। झलमल सितारे सारे करते आपको वंदन है। एसईसीएल की नींव रखने वालों को मेरा शत शत अभिनंदन है, मेरा शत शत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा पर्सनल विभाग से, कार्मिक विभाग से कि वे हमारे सभी अतिथिगणों को बैजेस लगा करके उनका सम्मान करें। Dear all, we are witnessing this 39th Foundation Day of SCCL. And we all are indeed honored to be witnessing this very spectacular show organized in the premises of SCCL main building. बैजेस लगा करके हमारे अतिथिगणों का सम्मान।
मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक महोदय आदरणीय डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा साहब से और निदेशक मंडल से के समक्ष आए। निदेशक मंडल एसईसीएल संचालन समिति एवं अन्य अतिथिगणों से निवेदन के दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। मुख्य सतर्कता अधिकारी महोदय से भी निवेदन और आप सभी से एक मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि जब भी प्रज्वलित किया जा रहा है तो हम जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादित करें। अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के इस बहुत ही प्यारे से मनोरम दृश्य को हम अनुभव करें। हमारे नेत्रों में इस अनुपम दृश्य को हम संजो कर रखें। यह क्षण, यह समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सभी 39वें स्थापना दिवस को यहां पर महसूस कर रहे हैं, उसका एक अंग बने हुए हैं। थैंक यू डियर सर। जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादित कर रहे हैं पुनः एक बार। यह बहुत ही मनोरम दृश्य हम सभी के समक्ष और हम गौरवान्वित हुए हैं आज हमारे अति विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति से भी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हमें अनुग्रहित करें। डियर फ्रेंड्स, yesterday is a dream, tomorrow is a vision, but a day well lived makes every yesterday a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope. Carrying the same vision, we, the SECL family, have successfully completed 38 glorious and tremendous years of its existence. I extend my heartiest welcome and salute to all the visionary personalities who helped SECL scale newer heights by each passing year. This occasion gives me an opportunity to take stock of our achievements and rededicate ourselves to face new challenges that lie ahead. Our Foundation Day is the time to celebrate our growth, our values, and our commitment for making this world a better place. It reminds us of all our shared values and vision and inspires us to continue working towards our goal together. मित्रों, किसी महक की तरह हम गुलों में उड़ते हैं, किसी महक की तरह हम गुलों में उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेगी, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। यह एसईसीएल परिवार हौसलों की उड़ान भरता है और आप सभी इसके द्योतक हैं। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। मैं निवेदन करूंगा, अब हम हमारे जो आज के इस 39वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित विशिष्ट अतिथि वर्ग हैं, उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत एवं शॉल श्रीफल से सम्मान करने हेतु एसईसीएल के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक महोदय परम आदरणीय डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा साहब से निवेदन है कि सर्वप्रथम आर.बी. माथुर साहब पूर्व अध्यक्ष प्रबंध निदेशक महोदय का शॉल श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। पुष्प की जगह देगा, पौधा हम दे रहे हैं। वी के सहगल साहब पूर्व अध्यक्ष प्रबंध निदेशक। माथुर साहब नहीं है क्या? इसी श्रृंखला में श्री एन.के. सिंह साहब पूर्व निदेशक तकनीकी संचालन, इनका भी एक पौधा देकर के सम्मान एवं शॉल श्रीफल से भी सम्मान इनका किया जाएगा। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा श्री C.L. श्रीवास्तव साहब पूर्व निदेशक तकनीकी संचालन का भी एक पौधा एवं शॉल श्रीफल देकर के सम्मान करें।
इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष प्रबंध निदेशक महोदय से कि के श्रीवास्तव साहब पूर्व निदेशक कार्मिक हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी एक पौधा एवं शॉल श्रीफल देकर के स्वागत करें। धन्यवाद सर, आपसे निवेदन कि स्थान ग्रहण कर। अब मैं निदेशक कार्मिक आदरणीय देवाशीष आचार्य सर से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में हमारे इस आज के 39वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि एसईसीएल के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक परम आदरणीय डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा साहब का स्वागत करें, शॉल श्रीफल देकर के उनका सम्मान करें। ये हम सब के लिए गौरवशाली क्षण है और जोरदार तालियों के अभिवादन मैं आप सभी से अपेक्षित करता हूं। मैं पुनः निवेदन करूंगा देवाशीष आचार्य सर से कि हमारे निदेशक वित्त आदरणीय जी श्रीनिवासन सर यहां पे विराजमान हैं, उनका भी शॉल श्रीफल एवं पौधा देकर के सम्मान करें। पुनः निवेदन देवाशीष आचार्य साहब से कि श्री एस.एन. कापरी साहब निदेशक तकनीकी संचालन एवं निदेशक योजना परियोजना हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका स्वागत शॉल श्रीफल एवं पौधा देकर के करें, उनका सम्मान करें। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा देवाशीष आचार्य सर से कि जयंत कुमारी खमारी सर मुख्य सतर्कता अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका शॉल श्रीफल एवं पौधा देकर के स्वागत करेंगे। कला में मैं निवेदन करूंगा देवाशीष आचार्य सर से कि हमारे बीच में रिटायर्ड आईओएफएस टी विनायक राउत सर उपस्थित हैं, टी विनायक राउत सर उपस्थित हैं, उनका शॉल श्रीफल एवं पौधा देकर के हम स्वागत करेंगे। मैं पुनः निवेदन करूंगा निदेशक कार्मिक आदरणीय देवाशीष आचार्य सर से कि हमारे बीच में संचालन एसईसीएल के संचालन समिति के सम्माननीय सदस्य आदरणीय गोपाल नारायण सिंह जी उपस्थित हैं। उनका शॉल श्रीफल एवं पौधा देकर के स्वागत करें। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एसईसीएल संचालन समिति के आदरणीय वी.एम. मनोहर जी उपस्थित हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा देवाशीष आचार्य सर से कि ए.के. पांडेय सर एसईसीएल संचालन समिति के सदस्य हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका शॉल श्रीफल एवं पौधा देकर के हम सम्मान करें। ये नहीं है। देवाशीष आचार्य सर से पुनः निवेदन कि हमारे बीच में एसईसीएल कल्याण बोर्ड के अजय विश्वकर्मा जी, महेंद्र पाल जी, देवेंद्र कुमार निराला जी उपस्थित हैं, उनका हम शॉल श्रीफल एवं पौधा देकर के स्वागत करेंगे। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जी.एस. प्रसाद साहब एसईसीएल कल्याण बोर्ड के आदरणीय सदस्यगण, उनका भी हम शॉल श्रीफल एवं पौधा देकर के सम्मान करेंगे।
बोलते जाता हूँ। मैं निवेदन करूंगा पुनः एक बार निदेशक कार्मिक आदरणीय देवाशीष आचार्य सर से कि वे हमारे एसईसीएल सुरक्षा समिति के सम्माननीय सदस्य आदरणीय इंद्रदेव चौहान साहब, उनका पौधा एवं शॉल शिफल से सम्मान करें। इंद्रदेव चौहान साहब, उसके पश्चात सिस्टा काउंसिल एवं ओबीसी एसोसिएशन के सदस्यों का मैं यहां पर सम्मान करना चाहूंगा। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा देवाशीष आचार्य सर से कि लुकस तेलारे जी, अध्यक्ष सिस्टा एसईसीएल, उनका शॉल शिफल एवं पौधा देकर के सम्मान करें। महासचिव सिस्टा एसईसीएल के श्री आरपी खांडे जी उपस्थित हैं, उनका भी शॉल शिफल एवं पौधा देकर के सम्मान करें। अध्यक्ष काउंसिल अध्यक्ष एसईसीएल श्री ओपी नवरंग जी उपस्थित हैं, उनका भी शॉल शिफल एवं पौधा देकर के स्वागत करें। महासचिव काउंसिल एसईसीएल श्री ए विश्वास साहब उपस्थित हैं, उनका भी पौधा एवं शॉल शिफल देकर के सम्मान करें। हमारे बीच में आज उपस्थित हैं अध्यक्ष ओबीसी कोल एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन एसईसीएल के अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध कुमार चंद्रा सर, इनका भी शॉल शिफल एवं पौधा देकर के स्वागत करें। महासचिव ओबीसी कोल एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन पच्चू प्रसाद जी नहीं है, ठीक, धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा निदेशक कार्मिक महोदय से देवाशीष आचार्य सर से कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं निवेदन करूंगा ए.के. संतोषी साहब, महाप्रबंधक कार्मिक औद्योगिक संबंध एनईई से, कि वे समक्ष आए और हमारे निदेशक कार्मिक आदरणीय देवाशीष आचार्य सर का शॉल श्रीफल एवं पौधा देकर के स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं महाप्रबंधक विपणन विक्रय आदरणीय सीबी सिंह साहब से निवेदन करता हूं कि वे समक्ष आकर के स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। परम आदरणीय डॉक्टर पीएस मिश्रा साहब, श्रीमान जी श्रीनिवासन साहब, श्रीमान एस एन कापरी साहब, श्रीमान जेके खामरी साहब, सम्मानीय एरिया जनरल मैनेजर साहब, उत्साह से भरे हुए आकाश को छूने के लिए तैयार उनकी टीम, सपोर्ट सिस्टम की तरह आगे बढ़ने की सुरक्षा देने वाले, कवर फायर देने वाले हेडक्वार्टर के एचओडीज, उनकी टीम, स्टीयरिंग कमेटी, वेलफेयर बोर्ड, सेफ्टी कमेटी, सिस्टा, ओबीसी एसोसिएशन के पदाधिकारी महोदयगण, देवियों, सज्जनों, मित्रों, बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं। ये सृजन, निर्माण या स्थापना, ये सिर्फ 3 अक्षरों के शब्द नहीं हैं। ये शब्द अपने आप में बहुत गहरे अर्थों को समाहित करते हैं। किसी भी निर्माण में, किसी भी सृजन में
जिनका योगदान होता है वो हमेशा पूजनीय होते हैं। पिछले 38 साल की जो गौरवमयी यात्रा रही है एसईसीएल की, अगर हम पीछे देखें तो 38 साल पहले इस पावन भूमि में एसईसीएल नाम का एक पौधा अंकुरित हुआ था, जो आज एक विशाल वृक्ष की तरह खड़ा है। ये जो सृजन निर्माण का क्रम है, इस क्रम में जिन सुदृढ़ हाथों ने इसको सजाया है, संवारा है, सुरक्षा दी है, ऐसे हाथ, ऐसे विद्वान दिमाग आज हमारे बीच उपलब्ध हैं। इन्होंने जिस प्यार से संवारा है, मैं उनका नाम उल्लेखनीय करना चाहता हूं। उसमें श्रीमान सहगल साहब, श्रीमान NK श्रीवास्तव साहब, सिंह साहब, CL श्रीवास्तव साहब, KK श्रीवास्तव साहब, जो यहाँ मौजूद हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, नमन करते हैं और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षा भी रखते हैं। ये समय के विभिन्न खंडों में कई उतार चढ़ाव को देखता हुआ एसईसीएल आगे बढ़ रहा था, मगर कुछ वर्ष पूर्व उसी समय के, उसी काल के खंड ने एसईसीएल को थोड़ा कमजोर बना दिया। हमारे तने हुए कंधे झुक गए, शेर ऐसा लगा घायल हो गया है। मगर फिर उसी कालखंड ने निर्णय लिया, करवट ली और एसईसीएल में डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा साहब का अवतरण हुआ। हम अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे थे, लेकिन इनके अवतरण ने हमें नए जोश से भर दिया। हम एक नई ऊर्जा के साथ फिर से दौड़ने लगे, शेर फिर से दहाड़ने लगा और वो विशाल वृक्ष जो थोड़ा मुरझा चला था फिर से अंकुरित हुआ और हम इस देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं को सम्मानपूर्वक पूर्ति करने में सक्षम हुए। एसईसीएल के हम प्राउड अधिकारी, कर्मचारी उनके नेतृत्व में फिर से काम करने लगे। मैं इस पावन वेला में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं और मंच को आगे की कार्रवाई के लिए सुपुर्द करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद सर आपका। अब हम हमारे महिला अधिकारी एवं महिला कर्मचारियों द्वारा एक स्वागत गीत तैयार किया गया है। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि वे स्वागत गीत प्रस्तुत करें और आप सभी से निवेदन की जोरदार तालियों से इनका मनोबल बढ़ाएं। शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम नित प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम नित्य निरंतर दानवता
सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता, सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता। संकल्प अभिजित अभिमतम, संकल्प अभिजित अभिमतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, नित प्रियम भारत भारतम, नित प्रियम भारत भारतम। स्वागतम शुभ स्वागतम, अर्थ स्वागतम शुभ स्वागतम। कुसुमित नई कामनाएं, सुरभित नई साधनाएं, कुसुमित नई कामनाएं, सुरभित नई साधनाएं। मैत्री मति क्रीड़ांगन में प्रमुदित बंधु भावनाएं, मैत्री मति क्रीड़ांगन में प्रमुदित बंधु भावनाएं। शाश्वत सुविकसित इति शुभम, शाश्वत सुविकसित इति शुभम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, नित प्रियम भारत भारतम, नित प्रियम भारत भारतम। स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। स्वागतम अति शुभ स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद। यादों का विशाल आकार संजो रखा है एक परिवार, यादों का है विशाल आकार संजो रखा है एक परिवार। एक ही माला के मोती हैं हम सब, ऊर्जा के क्षेत्र के ज्योति हैं हम सब। नहीं है यह केवल एक कार्यालय का प्रांगण, यह तो है स्नेह भक्ति से सजा एसईसीएल के घर का आंगन, एसईसीएल के घर का आंगन। शुरुआती दिनों से लेकर के अब तक एसईसीएल संघर्षों से जूझता रहा और अपने इस सफर में 38 वर्षों के बहुत ही गौरवशाली सफर में बहुत सारी उपलब्धियां एसईसीएल ने अर्जित की। इन उपलब्धियों के अंदर में कुछ अनगिनत ऐसी उपलब्धियां हैं जिसे कई लोग सराहते हैं। ये उपलब्धियां सहजता से हमें प्राप्त नहीं हुई। इसके अंदर में हमारे इस एसईसीएल की जिन्होंने नींव रखी, जिन्होंने निरंतर अपनी सेवाएं दी, उनके सहयोग से, उनके बलिदान से, उनकी दूरदृष्टि से एसईसीएल का ये सफर बहुत ही सफलतम रहा। आइए दोस्तों, आज इस गौरवशाली दिन के अवसर पर हम इस एसईसीएल के गौरवशाली प्रगति को दर्शित करता हुआ एक लघु फिल्म देखना चाहेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि हम एक लघु फिल्म प्रस्तुत करें। ऊर्जा की बुनियाद है हमसे है जगमग आज और कल। हम हैं एसईसीएल, हम हैं एसईसीएल। तेजी से बढ़ते भारत को विकास का ईंधन देता है कोयला उद्योग। राष्ट्र के दमकते भाल पर चमकता है काला हीरा। देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 5वां हिस्सा साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की कोयला खदानों से आता है। अपने संस्थापना के पहले वर्ष 1985-1986 में एसईसीएल का उत्पादन लगभग 36 मिलियन टन था और वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कंपनी ने रिकॉर्ड 167 मिलियन टन कोयला उत्पादित किया। एसईसीएल के इस गौरवशाली विकास यात्रा में खनन मनीषियों की, हमारे भूतपूर्व नेतृत्व शक्तियों की,
महत्वपूर्ण भूमिका रही। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 24 मिलियन टन से अधिक की वार्षिक वृद्धि के साथ एसईसीएल ने एक वर्ष में सर्वाधिक कोयला उत्पादन का कीर्तिमान बनाया। गेवरा खदान में 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाली देश की पहली खदान बनी तथा अब 70 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने की ओर अग्रसर है। कुसमुंडा दीपिका सहित कंपनी की मेगा परियोजनाएं अपने स्वरूप, संचालन व विस्तार में राष्ट्र के ऊर्जा नक्षत्रों की तरह दमक रहे हैं। फास्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के जरिए इको फ्रेंडली तकनीक से कोयले को तेजी से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद मिल रही है। खुली खदानों में सरफेस माइनर व अंडरग्राउंड माइंस में कंटिन्यूअस माइनर जैसी आधुनिक तकनीकों ने उत्पादकता में अभिवृद्धि के नए आयाम खोले हैं। विश्रामपुर क्षेत्र की केतकी अंडरग्राउंड माइन कोल इंडिया में एमटीओ मोड पर उत्पादन शुरू करने वाली पहली खदान बनी है। मेगा प्रोजेक्ट में डिजिटाइजेशन के जरिए ड्रोन टेक्नोलॉजी, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग आदि को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। वहीं एसएपी सिस्टम लागू करने से कंपनी के कार्य प्रणाली में तेजी आई है। सतत धारणीय विकास हमारे कार्य संचालन का अभिन्न अंग है। केनापारा इको टूरिज्म साइट, अन्नया वाटिका देश भर में सस्टेनेबल माइनिंग का सुंदर उदाहरण बनकर उभरे हैं। मानिकपुर पोखरी, कोरबा कोल फील्ड्स में 3 नए इको पार्क का विकास, गेवरा मेगा प्रोजेक्ट में मियावाकी प्लांटेशन की शुरुआत पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के जीवंत उदाहरण है। कंपनी नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी विकास की पहल कर रही है। भटगांव एवं विश्रामपुर क्षेत्र में लगाई जा रही 40 मेगावाट के ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड परियोजना कोल फील्ड्स में स्थापित बड़े सोलर प्लांट्स में से एक होगी। सोलर परियोजनाओं तथा डीकार्बोनाइजेशन के जरिए एसईसीएल एक नेट पॉजिटिव कंपनी बनाने की ओर अग्रसर है। आने वाले कुछ वर्षों में चेचई अमरकंटक में मध्य प्रदेश ताप विद्युत निगम के साथ एसईसीएल का अपना पावर प्लांट होगा। एसईसीएल की रेल कॉरिडोर परियोजनाएं कोरबा व मंडरायगढ़ के सुदूर अंचलों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी। 300 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क तथा लगभग 10,000 करोड़ से विकसित हो रही इन परियोजनाओं के अंतर्गत खरसिया धर्म जयगढ़ रेल लाइन का लोकार्पण हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से किया गया है। आने वाले 2 से 3 वर्षों में इसका द्वितीय चरण तथा छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के भी पूरे हो जाने की आशा है। इससे मंडरायगढ़ कोल फील्ड से लगभग 125 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले के डिस्पैच की क्षमता विकसित होगी और उपभोक्ताओं तक त्वरित रूप से कोयला पहुंचाया जा सकेगा। सीएसआर के जरिए एसईसीएल ने समाज में विकास के नए अवसर पैदा किए हैं। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में सीएसआर अंतर्गत 250 करोड़ से अधिक के विकासात्मक कार्य किए गए हैं। एसईसीएल के सुश्रुत योजना के जरिए एसईसीएल के संचालन क्षेत्रों के होनहार नौनिहालों को निःशुल्क मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग दी जा रही है। कंपनी के मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के लगभग 800 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की है, जिससे ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी आधुनिक तकनीक से अपनी जिज्ञासा को और मजबूत कर पा रहे हैं। संवेदनशील और संवादशील प्रबंधन के मंत्र के साथ एसईसीएल निरंतर आगे बढ़ रहा है। गत वर्ष एसईसीएल ने 773 भूस्वामियों को रोजगार प्रदान किया, जो कि पिछले दशक में सर्वाधिक रहे। सीएमडी डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा के नेतृत्व में कंपनी ने मिशन मोड में कई पहल की। लर्निंग कल्चर के लिए मिशन नचिकेता, सुरक्षा व सस्टेनेबिलिटी के लिए मिशन सुदेश, सेफ्टी अवेयरनेस के लिए मिशन मितवा, सतर्कता जागरूकता के लिए मिशन जटायु आदि के जरिए कार्यबल को उत्साहित और प्रोत्साहित करने में बेहद मदद मिली है। सबके साथ और सहयोग से प्रगति है। एसईसीएल की संस्कृति अपने वरीय जनों के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहा है। एसईसीएल और आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम उनके सहयोग एवं समर्पण की वंदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और राष्ट्र के इस स्वप्न को साकार करने में सतत प्रयासरत है हम।
हम हैं एसईसीएल। गौरवान्वित महसूस करें क्योंकि हम एसईसीएल के एक अभिन्न अंग हैं। इट्स आवर प्रिविलेज, हमारे बीच में आदरणीय आर.बी. माथुर साहब, पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक महोदय यहाँ पर उपस्थित है। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे एसईसीएल के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक महोदय आदरणीय डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा साहब से कि वे समक्ष आकर के आदरणीय आर.बी. माथुर साहब, पूर्व अध्यक्ष प्रबंध निदेशक का शॉल शिफल एवं पौधा देकर के स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं आदरणीय देवाशीष आचार्य सर से थोड़ा निवेदन करूंगा, कष्ट दे रहा हूं, क्षमा चाहता हूं सर। यही है ना, सुजीत कुमार सिंह बीएमएस के एसईसीएल संचालन समिति के आदरणीय सदस्यगण उपस्थित हैं, उनका हम शॉल शिफल एवं पौधा देकर के सम्मान करेंगे। इस श्रृंखला में हमारे बीच में एसईसीएल कल्याण बोर्ड के आदरणीय महेंद्र पाल सिंह जी उपस्थित हैं, उनका भी शॉल शिफल एवं पौधा देकर के स्वागत करेंगे। एसईसीएल सुरक्षा समिति की ओर से एक मिनट, एसईसीएल कल्याण बोर्ड के ही देवेंद्र कुमार निराला जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर, आपका भी स्वागत है। ओके, मैं निवेदन करूंगा एसईसीएल सुरक्षा समिति की ओर से श्री बी धर्मजाराव साहब उपस्थित हैं, उनका शॉल शिफल एवं पौधा देकर के स्वागत करें। साथ ही एसईसीएल सुरक्षा समिति के सदस्यगण आदरणीय संजय सिंह जी उपस्थित हैं, आपका भी शॉल शिफल एवं पौधा देकर के स्वागत करें। आप सभी सम्माननीय सदस्यों का इस मंच के माध्यम से हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति को मान्यता प्रदान कर आगे बढ़ने की अनुमति लेकर के हम बताते हैं आपको कि हमारे बीच में आज एक बहुत ही मशहूर हस्ती उपस्थित है। उनका संक्षिप्त परिचय मैं इस तरह से देना चाहूंगा। दिस पर्सनालिटी वॉज बॉर्न ऑन October 3, 1943. He is none other than Gurcharan Das, who is an author and a former CEO of Procter & Gamble India. He is the author of a much acclaimed trilogy based on the classical Indian ideal of life's goal. India Unbound was the first on Artha, that is material well-being. The Guardian called it a quiet earthquake, is available in 19 languages and is filmed by the BBC. Gurcharan Das studied philosophy at Harvard University and later attended Harvard Business School, AMP, where he is featured in 3 case studies. After heading Procter & Gamble India and Southeast Asia, he became Managing Director, Procter & Gamble Worldwide, for strategic planning. But then his life took a turn. He made a diverse decision. At 50, he took early retirement and became a full-time writer. He writes a regular column for the Times of India and 5 Indian language papers in Hindi, Telugu, Marathi, Tamil, Gujarati, and contributes to Financial Times, Wall Street Journal, Foreign Affairs, and the New York Times. He is a speaker to some of the world's largest corporations. His other books include India Grows at Night, a liberal case for a strong state, which was on the FT's best book for 2013. He is also the author of a novel, A Fine Family, a book of essays, The Elephant Paradigm, and an anthology, 3 plays consisting of Larin Sahib, a prize-winning play about the British in India,
which has been presented at the Edinburgh Festival. Then Meera, which was produced off-Broadway to critical acclaim from New York's critics, and 9 Joko Hills, which has been performed in major Indian cities. He is presently editing for Penguin the story of Indian business in 15 volumes and lives in Delhi with his wife. The Difficulty of Being Good, one of his books on the stubble art of dharma. It says, why should we be good? How should we be good? And how might we more deeply understand the moral and ethical feelings splashed across today's headlines that have not only destroyed individual lives but caused widespread calamity as well, bringing communities, nation, and indeed the global economy to the brink of collapse. In The Difficulty of Being Good, Guru Charan Das seeks answers to these questions in an unlikely source, to 2000-year-old Sanskrit epic Mahabharata. The sprawling, witty, iconic, and delightful poem, the Mahabharata is blessed with the elusive notion of dharma, in essence, doing the right thing. When a hero does something wrong in a Greek epic, he wastes little time on self-reflection. But when a hero falters in the Mahabharata, the action stops and everyone weighs in a different and often contradictory take on dharma. Ladies and gentlemen, it's a proud privilege for us to be welcoming with a thunderous round of applause a well-acclaimed management guru, Mr. Guru Charan Das ji. May I request the winner of Writer of the Year awardee, Shri Guru Charan Das ji, to be on the stage. Please welcome him with a thunderous round of applause. जोरदार तालियां मतलब जोरदार लगनी चाहिए. Winner of the Writer of the Year awardee before us is Guru Charan Das ji. May I request to be placed centrally, sir? Now I request, मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक महोदय आदरणीय डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा सर से कि वे मंच पर आकर के हमारे मैनेजमेंट गुरु, विनर ऑफ राइटर ऑफ द ईयर अवार्डी आदरणीय गुरुचरण दास जी को शॉल, श्रीफल एवं पौधा देकर के उनका सम्मान करें. यह हम सब के लिए एक बहुत गौरवशाली क्षण है कि हमारे बीच में इतनी महान हस्ती, जिन्होंने हार्वर्ड में अपनी पढ़ाई की फिलॉसफी में और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के ये सदस्य रहे, जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें. Guru Charan Das sir, it's a privilege for us to be welcoming you on this auspicious occasion of our Foundation Day. नमस्कार. सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि मेरी हिंदी काफ़ी टूटी फूटी है, क्योंकि मैं बचपन से ही देश के बाहर रहा हूँ, तो काफ़ी लेट मैं आया वापस हिंदुस्तान, और इसलिए मैं ज़्यादा तो अंग्रेज़ी बोलूँगा, हिंदी थोड़ी थोड़ी कम मिक्स करूँगा, जैसे इंग्लिश कहते हैं इस भाषा को. मुझे जाकिर हुसैन जी ने बुलाया मैनेजमेंट गुरु, तो मैं कहूँगा कि मेरा आइडिया, ऐसा जो गुरु होता है वो उसका आइडिया, मेरा आइडिया है कि वो है गुड एट अंडरस्टैंडिंग GU बट रिलेटिवली यूजलेस RU. ये मेरे आइडिया है गुरु में.
लेकिन गुरु तो मेरे नाम में भी है, तो ये प्रॉब्लम है। जब मैं 3 साल का था ना, अप टू 3 years old, मेरा नाम था अशोक कुमार। अच्छा नाम है। तो मेरी जो दादी थी उसने कहा, उसने सोचा कि मेरी माँ ने, उसकी डॉटर इन लॉ ने मुझे नाम दिया है क्योंकि वो सोचती थी कि मेरी माँ was secretly in love with a Bollywood actor named अशोक कुमार। तो ये तो ठीक बात नहीं थी कि मेरा नाम होना चाहिए। तो मुझे अपने गुरु के पास ले गई और गुरु को कहा कि भाई इनू ना दियो, पंजाबी गुरु सीगा। तो गुरु जी ने देखा, उसने मुझे गुरु के चरणों में डाला है। तो गुरु जी ने कहा अच्छा, तो इसको गुरु चरण दास बुलाएंगे। तो 3 साल की उम्र पे ओवरनाइट की उम्र पे ओवरनाइट I was transformed from the Prince of Happiness, Ashok Kumar, to the humble servant of the feet of the Guru. तो काफी साल बाद मैंने गुरु जी से पूछा कि ये क्या मतलब है आपका, क्यों मुझे ये नाम दिया। तो उन्होंने कहा, you know, it is good to have a little bit of humility in life. And then he explained that his idea of such a guru was someone who took his work seriously but not himself seriously. To take your work seriously but not yourself seriously. तो मैंने अभी एक किताब लिखी है, it has just come in being launched around the country and in the world. वो किताब का नाम है Another Sort of Freedom. और वो क्या है? What is that? वो किस किस्म की आज़ादी है, किस किस्म का स्वतंत्र है? What is that? Well, this is not the place to talk about that. Read the book. मैं बहुत से लीडर्स को मिला हूँ अपनी ये 80 साल की जिंदगी में, और सब में they had a few qualities in common. So let me begin with what are the qualities I observed in leaders. And you are all leaders here of this great SECL enterprise. And I'm very happy that you've invited me on your Founders Day. It's truly a pleasure. So what are these qualities? The main quality, the main difference between a great leader and a mediocre, average leader is attitude. And so what does this attitude? What is this attitude?
One, it is fierce determination. They are almost stubborn. That kind of determination. Not intelligence, not skills, attitude. The same kind of driving determination that Draupadi had. And after the Vastraharan, she vowed revenge. And the war in the Mahabharata was a result of Draupadi's determination. This another quality that great leaders have is integrity. Now, integrity is seen not through words, but through action. It's the kind of integrity that Yudhishthira has in the Mahabharata. A third quality that great leaders, I have observed, have is humility. And that's what I've already spoken about it to you. It is the same quality that that the Guru spoke about. Not to take yourself too seriously. And the fourth, finally, a quality I would mention is the desire to be somebody and not nobody. I think all human beings have that desire, but these leaders, I noticed, had it more. It's the quality that actually, if we were talking about Bharat, that Karna has. Karan. And how he and his actions, why he did not switch sides. When Krishna said, come and join us, you are a Pandava. He did not, because he was given to be somebody by Duryodhana. Anyway, this is a different story. But let me thank you for inviting me. मैंने कोल इंडिया की बहुत सी प्रशंसा सुनी है, इसीलिए खास खुशी है. My old friend Anil Swarup, who was Coal Secretary some time ago, calls Coal India one of the highest performing PSUs, public sector companies in India. I congratulate you. My broker on the stock exchange is delighted with the stock share price of Coal India. And ये खास चीज है कि it is very creditable. It's creditable for a public sector company when you are operating under great disadvantages. You're operating under great disadvantages. For example, you can't promote, you can't reward somebody for outstanding performance. You follow the bad old way of the bureaucracy of seniority. That's a great disadvantage for any organization. Then you can't get, if somebody is a really bad performer, you can't get rid of them. That's a disadvantage. You have the disadvantage that the government gives you so much responsibility, but they don't give you autonomy.
That is the central part of succeeding in the market, to have autonomy of action. And here you have got these people in Delhi sitting in the ministry interfering with your work. So, and of course, I have grown up in the private sector, so I'm familiar with problems like this. And now you will have to compete with commercial mining coming up. You'll have to compete with the private sector. So then you can't close unproductive mines because you are a government company. I want to, so enough about Coal India, enough about SECL. Let's talk about, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा और ये वाकई ट्रू लाइफ स्टोरी है और जिस व्यक्ति की कहानी ये है वो मेरी कंपनी में काम करता था। उसका नाम था कांबले, अकोला डिस्ट्रिक्ट से आया था और बम्बई में हमारा दफ्तर था। तो सबसे पहली बार उसने मुंबई देखा और बड़ा एक्साइटेड था और he joined the company as the assistant security guard in the company for the night shift. तो 5:30 बजे शाम को उसकी शिफ्ट शुरू होती थी. And from the first day that he arrived, I knew we had somebody special. First of all, he was very excited to see all the machines in the office, like a child. He saw the coffee machine. He wanted to know how it works. He saw the telex machine. उसको अंग्रेजी भी आती थी, पर telex मशीन चलाना चाहता था. तो हम एडवर्टाइज करते थे, तो ऑफिस में प्रोजेक्टर भी था, तो प्रोजेक्टर देखा उसने. So he was like a child. And like a child, you know, बच्चा कैसा होता है? बारिश होती है और बड़े लोग सब छतरी लेके बाहर जाते हैं और रास्ते में एक खड्डा होता है, खड्डा पानी में से भरा होता है, तो लोग अपने रेनकोट पहन के छतरी लेके केयरफुली सब लोग ऐसे जाते हैं. तो बच्चा क्या करता है? बच्चा खड्डे में खड़ा जंप करता है. क्यों? क्योंकि उसको देखना है कि क्या होता है खड्डे में जंप करने से. सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ जंपिंग इनटू द खड्डा is what our school system, parents, teachers, they try to kill in our children. Luckily, in the case of Kamble, they could not kill it. And there he had in plenty about Kamble. And I'll come to why that quality was important. But let me continue the story of Kamble. So, Kamble learns how to make coffee, and he's a security guard, but he makes coffee, then he has to serve it to some people. So on his rounds in the office, he's serving coffee to people. And
then he shows an interest in how the company operates. So he asks questions, and by 3 months, he seems to know everything. He seems to know. One day, I want to know where the finance director of our company is. So I try to, people say, ask Kamble. Agar koi sawal, anybody had a question after the 5:30 in the evening, you said ask Kamble. कुछ सवाल पूछो, उसका जवाब कामले को मालूम था. तो he told me in 3 minutes. By then he had also learned to operate the telephone. And what he did was, he found out that Kamble was at Ashoka Hotel in Delhi for a meeting, and he was in his room, and he connected me in 3 minutes. So I saw the magic in Kamble in this way. Another day, one of the officers in the company dropped his wallet, और काम्बले को मिल गया उसका पर्स. तो काम्बले भाग के आया और मुझे कहता है कि भी इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं और उसमें आईडी भी था, तो ये इनका है होगा ये. और वो कह रहा है कि आप मुझे कह रहा है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था, आप अब सिक्योरिटी गार्ड बन जाइए 1 घंटे के लिए, मैं टैक्सी लेके जाऊंगा और ये उसको दूंगा क्योंकि बहुत परेशान होगा. और उसने पता कर लिया कि उसका घर पाली हिल में है, बांद्रा में. तो वही करता है, मुझे चाबियां मेरे पास छोड़ जाता है ऑफिस की. और वो इतने सारे पैसे थे क्योंकि वो व्यक्ति घर ले रहा था उस दिन, और जो सेलर था ना, वो उसके घर आ रहा था एडवांस के लिए, और ये घर का एडवांस था, इसलिए लाखों रुपए थे उसके वॉलेट में. और फिर मुझे कहता है कि किसी को मत बताइए कि ये क्या हुआ, बेटर है कि ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए. अच्छा, मैंने कहा. खैर 8-9 महीने बीत गए तो काम्बले को पता चला कि हमारी जो टेलीफोन ऑपरेटर हैं उनका बच्चा हो रहा है, वो मैटरनिटी लीव में जा रही हैं. तो वो पर्सनल हेड, उस जमाने में हम पर्सनल कहते थे, आजकल HRD कहते हैं. तो पर्सनल हेड के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई मुझे चांस दो, मैं थक गया हूँ रात की ड्यूटी करने से, तो मुझे चांस दीजिए और 2-3 महीने के लिए मैं आपका टेम्पररी टेलीफोन ऑपरेटर डे टाइम जॉब में बन जाऊंगा, और जब वापस आएंगी तो ठीक है, मैं अपनी सिक्योरिटी गार्ड फिर बन जाऊंगा. पर जो हेड ऑफ पर्सनल था उसने कहा, भाई काम्बले, हमारी कंपनी मल्टीनेशनल है, हमें दुनिया भर से फोन कॉल आते हैं, तो आप कैसे बन सकते हो टेलीफोन ऑपरेटर. तो काम्बले उसको समझाता है कि भाई मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, पर
वो साहब कहते हैं कि नहीं यार, ये काम नहीं चलेगा, वी वांट पीपल टू स्पीक फ्लुएंटली, और तुम तो कंपनी को भी बुलाते हो, कंपनी का नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तुम कहते हो प्रॉक्टर एंड गाम्बले, ये भी बात। तो बेचारा परेशान होके कामले चले जाता है। तो मैं थ्रू द ग्रेप वाइन मैं सुनता हूँ कि क्या हुआ। तो फिर मुझे तो पता था कि ये कामले बड़ा खास आदमी है, ऐसा आमतौर नहीं मिलते ऐसे लोग। तो मैंने कहा पर्सनल वाले को कि भाई गेट अ बैकस्टॉप रेडी, तो 1-2 दिन ट्राई करते हैं, गिव हिम अ चांस, और अगर नहीं कर चलेगा तो वील गेट द अदर पर्सन टू डू इट। तो वो मान गए, और तो अगले दिन कामले साहब टेलीफोन बूथ में ऑपरेटर बन के बैठे हुए हैं, और वो उस जमाने EPBX मतलब नहीं था, ऐसे तारें लगानी पड़ती थी, शायद आपको किसी को याद भी हो। नेक्स्ट डे, अगले दिन कंपनी लॉयर आते हैं हमें मिलने के लिए, मिस्टर शाह ऑफ क्रॉफर्ड बेली, और कहते हैं कि मुझे कहते हैं शाह साहब कि गुरचरण, आपके पास नया EPBX सिस्टम आया है? मैंने कहा नहीं, पर फिर मैंने सोचा हमारा नया EPBX सिस्टम है कामले, तो मैंने कहा क्या है? तो वो कहते हैं कि भाई आज जब कल हमने देखा, उसने कहा कि मैंने फोन किया आपकी कंपनी को और तुरंत जवाब आ गया, मतलब ऑन द सेकेंड रिंग योर ऑपरेटर पिक्ड अप द फोन, whereas before your phone used to ring and only on the 6th ring or 5th ring did the phone get answered. So what is it? He says, Shah said that, look, maybe I thought you had a new system which immediately got the phone answered. So I asked Kamble, Sham ko, I was leaving the office, and I said to Kamble, तुम इतनी जल्दी क्यों फोन उठाते हो? तो उसने जो जवाब दिया, it absolutely floored me. उसने कहा कि it might be a customer. दूसरे वक्त वो साइड में कस्टमर आपको फोन कर रहा होगा और ऑर्डर देना चाहता होगा, और मैं कंपनी को ऑर्डर नहीं खोना चाहता, अमृतांजन या किसी और के पास चले जाएगा। हम विक्स बनाते थे, एक प्रोडक्ट विक्स बनाते थे हम। भाई, आई कैन टेल यू दिस, द हेड ऑफ मार्केटिंग और द हेड ऑफ फाइनेंस could not have given such a good answer as Kamble gave. He understood why the company existed. The company existed to satisfy its customers. It existed for the sake of customers. And, you know, like this, I could tell you many, many stories. I could tell you many, many stories about Kamble. But, I mean, one day I was passing by the telephone operator's booth, और कामले साहब क्या कर रहे हैं, वो बड़ी पेशेंटली समझा रहे हैं। कोई माँ मदर है और बच्चा उसका सर्दी जुकाम से परेशान होगा, तो समझा रहे हैं कि भाई आप गर्म पानी में विक्स डालिए और फिर उसका भाप बच्चे को लेना चाहिए। He was showing a commercial. He was reading out a commercial for that woman.
he had that sense of ownership of the company, that this is my company and this is a customer, and it's my duty to explain to the customer. And then he goes one step further and he says, other products are no good. This one is good. I understood that's the job of advertising. Advertising job is to tell the consumer, my product works, my competitor's product fails. And that is what Kamble was doing. Anyway, I could go on, but let me, यहाँ बड़ी discussion हो रही है जबरदस्त. So, all I want to tell you is that it is, Kamble then gets promoted, because company sees they've got somebody very special. Not only is he special, but he has a quality of infecting that childish enthusiasm in others, so they also enjoy working. And suddenly, lunchtime he brings a carom board one day, or carom shuru ho jati hai, and so he gets promoted from this security guard job, and he keeps getting promoted till one day he retires as a director of the company. Now, why am I telling you this story? मैं क्यों ये कहानी आपको बता रहा हूं? What is it about Kamble that makes the difference, makes you all of you? आप सब सोच रहे हैं होंगे कि भाई हमारे पास भी एक कामले होना चाहिए. In my team, I would also like a Kamble. So what are the qualities that makes Kamble a success? One I told you is that curiosity that he had, that he was able to make, like a child, a game out of every job that he got. And he loved coming to work. I think he would have paid us to come to work. Instead of us giving him a salary, he would have given us a salary if we let him come to the job. That's the kind of, wouldn't we all love to have Kambles? Then also I told you how much patiently explained to a housewife in Marathi. He was speaking, explaining to her, which means a sense of ownership. He felt this company now was mine. ये जो है, it is my company, and I have to work to see that my company is protected. When he was a security guard, then I think that incident of the wallet, जो उसने पर्स जो ढूंढा, that incident showed you a basic sense of integrity. अगर लाखों रुपए किसी को मिलते हैं, तो इट्स अ टेम्पटेशन इज थोड़े निकाल लो अपने लिए और फिर वापस कर दो. But the best quality was that he did not want people to know that he had done this. He was embarrassed. And that quality actually was seen as
someone who did not want necessarily to take credit for what was being done. In other words, it's similar to the lesson that Krishna is teaching Arjuna in the Gita of Nishkam Karma, Nishphala Karma. That you act for the sake of the action, you act from your duty, but you don't care who gets the credit. Very difficult to diminish the ego. It's a little bit like the lesson of the Guru who said, don't take your work seriously, but not yourself seriously. तो ये जो selfless, self-forgetting होता है, when you are busy, you always know it. You're busy and you say suddenly, oh, 6 बज गए. अरे, तो 2 घंटे कहाँ चले गए? Because you were involved, you were busy in your work. So that is when you forget yourself. And Kamble had that quality. He loved his work and he turned it into a game and he would forget it. It's a little bit like, an athlete. Athletes call it being in the zone. Athletes call it being in the zone. I don't know if you, thank you, Zakir Hussain ji. I don't know if you remember when Tendulkar was approaching his double century, the last one, the famous double century. And the reporter came and asked Tendulkar, Bhai, how did you feel like when you were coming close to your double century? And Tendulkar said, I don't know. I wasn't even there. The bat had become so big and the ball had become so big that the bat was just hitting the ball. That is self-forgetting. When you lose yourself is when you know that you are happy. And I think this is also the lesson. This is also the lesson of, let me just check the time that I'm not, we have some little time. Okay, so what are the other qualities that we would all like in the SECL employees? Another quality of Kamble was that he had a basic bias for action. In other words, he did not just think कि भी ये problem है. He used to say, ये problem कैसे हल करना है? That was his immediate reaction. See, how do I solve this problem? And it was from Kamble that I learned that I was global head of strategy for Procter & Gamble. So I thought I was a big guy. But I realized that a strategy is worth nothing unless you execute it well on the ground. And great companies, they don't have great strategies. They have great executional abilities, executive abilities. You're all executives here. And so you know what I'm talking about. Execution is more important than
strategy. Another quality that Kamble had was a basic service orientation, meaning that if you needed help, you instinctively said, ask Kamble, go to Kamble. He will help you. Now, you know, there are only three ways that a company can create competitive advantage. It can create competitive advantage through superior products. But to have superior products, there's a number of discussions going on in this. If you are bored in this meeting, may I request you might be happier going and having your discussions somewhere else. I'm sorry, but you're quite welcome to do as you like. We are a free country. I was saying there are three ways to create competitive advantage. Superior products. You have to invest in R&D, a lot of money to really come up with superior products. Second way is to have lower price. Well, all finance people know that if you drop your price, it goes down to the bottom line. And third quality is superior service. Superior service, if you have people like Kamble working with you, superior service is free. So what is the answer? The answer is to hire people for attitude and train them in skills. हम बिल्कुल उल्टा करते हैं. हम क्या करते हैं? जॉब इंटरव्यू के लिए व्यक्ति आया है, और हम उसको सवाल पूछते हैं क्या जानता है, क्या स्किल्स हैं उसकी. अरे भाई, वो IIM अहमदाबाद में टॉपर है, वो जानता है क्या क्या काम करना है. पता, योर जॉब इज टू फाइंड आउट कि भाई वो कैसे काम करता है, क्या एटीट्यूड लाता है काम करने में. So in the interview, the most important decision company makes is when they bring in a new person to work in the company. The most important decision, because you have that person for life. And we don't take that decision seriously. The one company I know which really takes that decision seriously, Goldman Sachs. My nephew was he was a topper in Princeton University. They made him go through 25 interviews at Goldman Sachs with partners. You know, partner time at Goldman Sachs is $10,000 per hour. And they would spend 90 minutes for hiring a new employee. Anyway, what I'm trying to say is take recruiting seriously and look for Kambles in the interview. Look for Kambles because they are there and they may not be very good. अंग्रेजी खास बोलते नहीं होंगे. कामले को अंग्रेजी नहीं आती थी पर सीख गया. So that is the secret between success and failure. Fill your company with Kambles. So I think I've said enough about Kamble. Or what is the benefit of living a life
like Kamble? I think it's a bigger question, because I'm asking you a question of the purpose of life. I'm asking you the secret of happiness in life. I used to believe that the secret of happiness was to love your work and love the person you live with. One sentence. That is the secret of happiness. Then I wrote these books, जो बता रहे थे Zakir Hussain Saab at great length. I wrote these books on the 4 classical purusharthas of our civilization. Artha, Dharma, Kama, Moksha. अब मैंने सब 4 लिख लिए हैं किताबें. The latest, another sort of freedom, is moksha. But I have interpreted moksha in my own way, but also in the original meaning of moksha. It's not a religious meaning of moksha. So, what I'm trying to say is, I feel now that the secret of happiness is to fulfill think of these purusharthas, artha, dharma, kama, moksha, as potentialities, capabilities we all have. And if we fulfill those capabilities, then we have lived a flourishing, happy life. Second meaning of happiness. And then what we have talked about, what Kamble achieved was a sense of purpose. A sense of purpose. And I think all of us, all human beings, हम सब चाहते हैं to live a life of some meaning. And which is one of the reasons why I quit my job at 50. Because I walked in one day in the office and I said to myself, हम Procter and Gamble के बहुत बढ़िया products हैं. आपने सुना होगा क्या Gillette blades, Vicks Vapor Rub, Pantene shampoo, Pampers, Tide, Ariel, all good type, good products. But how long, I said, can an adult male spend his life selling those products? So that's when I changed for myself. But Kamble found meaning every day that he came to work. It was fulfilling a sense of purpose. Now that message ultimately that I want to give you, because when you are living a life of purpose, you tend to live lightly. There's another Sanskrit word, laghima. Patanjali, in his Yoga Sutras, talks about laghima as one of the siddhis, one of the perfections of life. Now, living lightly, not like a feather, but like a bird, because you have agency, bird has agency. That is the benefit of living a life like Kamble. Kamble lived his life like a bird. Wouldn't we all like to live our lives like that? So, let me close here and thank you for inviting me again. I could keep talking about this for another hour, but there are better things to do. So, again, dhanyavad.
थैंक यू वेरी मच गुरुचरण दास सर। आपने एक आखिरी में बात कही कि बी ऑन द लाइटर साइड, तो मुझे एक शेर याद आया कि हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगी उड़ा करती है। थैंक यू वेरी मच सर। वी वुड हैव लाइक टू हैव सर, एक छोटा सा मैंने अनुमति चाही थी सर से कि यदि किसी को कोई मन में प्रश्न हो तो वो अपने प्रश्न यहां रख सकते हैं, हम आपके पास माइक लेकर के पहुंचेंगे। यू कैन जस्ट पुट अप अ क्वेश्चन टू हिम एंड ही वुड बी डिलाइटफुली आंसरिंग दिस क्वेश्चंस ऑफ योर्स। बी फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन व्हिच कम्स टू योर माइंड। हेलो, मे बी ऑन धर्मा, कर्मा, मोक्षा, एनीथिंग यू कैन आस्क। ही इज देयर टू एनलाइटन अस। हेलो, आप पूछ सकते हैं उनसे कुछ प्रश्न आपके मन में, हृदय में हो। Good morning, sir. Good I am morning. Raj Shekhar, GM Project Planning. Really, we are thankful for your this speech and lecture. You have seen many decades. I would like to ask what is your advice for present generation, either working in public sector awareness like us, to mold themselves or to adopt themselves, because the generation coming in this industry, initially they were not very happy, and maybe by default they are, as a purpose of job, they are entering in this. So what is your advice to our new generation, new executives or Gen X executives? What is your name? Raj, Rajshekhar. बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और उसका जवाब है, advice is to be like Kamble. It's a timeless, whether it's this generation, my generation, or my father's generation. The advice is the same for all young people. Yes, AI is coming, robotics are coming. The world, we don't know how many jobs will even exist 25, 50 years from now. But whatever it is, if you bring the kind of quality that Kamble has to your work, keep that childish curiosity, enjoy doing what you do, take ownership of your work, and don't worry who gets the credit for the job. That's the mantra. It's the same mantra that Arjuna is learning from his charioteer, from the Sutaputra in the Bhagavad Gita. कोई है और? कोई और है? प्लीज बेझिझक पूछिएगा। हेलो सर, ये सर मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन या क्वेरी कि आपने बताया कि यू आर राइटिंग सम बुक लाइक द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, तो आई विश टू नो whether you are covering the solution in that book, what difficulty they are facing in being good, and what is the solution, whether you are going to cover this thing in your book. In the book, in the difficulty of being good, what is the solution? Difficulty people face, but how to overcome the difficulty, whether you are going to cover it in your book. This is what I want to know. You haven't yet read it, the book. So ठीक है, अच्छा सवाल है, and I can only tell you that difficulty of being good is not a how to be good book. It's not a how to book.
It's not in the self-help section of the bookshop. But by reading it, I think some of the people that have told me already, they have read the book, you become more aware of what is right, what is wrong. Sometimes we don't know what is right, what is wrong. And for some things, there are no answers. अब जो मैंने अब किताब लिखी है, वो उसका नाम है Another Sort of Freedom. It is a memoir. Memoir मतलब autobiography है. और एक इंसिडेंट बताया है मैंने. When I was in kindergarten, I'll narrate that incident to you. मैं 4.5 साल का था और कोई 20-25 बच्चे हम किंडरगार्टन क्लास में थे. सबके पास एक पेंसिल बॉक्स होता था. वो ही 2.5 आने का होता था पेंसिल बॉक्स. 2 पेंसिलें होती थी, एक रबर होता था और हम सबके पास था. लेकिन जो लड़का बच्चा मेरे साथ में बैठता था उसके पास नहीं था. और मैं सोचता था क्यों नहीं इसके पास है. और फिर मैं काफ़ी इरिटेट हो जाता था क्योंकि वो मेरा बोरो करता था हमेशा. तो मैंने कहा यार इसके पास भी होना चाहिए. तो मेरे सामने एक अमीर बेटा, एक अमीर लड़का बैठता था. उसके पास 2 पेंसिल बॉक्स होते थे. वो सिर्फ वो ही आता था स्कूल गाड़ी में, इन अ कार. हम सब पैदल आते थे स्कूल. तो दूसरा पेंसिल बॉक्स उसका मेड इन इंग्लैंड विलायती पेंसिल बॉक्स था और लाल रंग का था. तो एक दिन रिसेस में मैंने देखा कि सब लोग चले गए हैं क्लासरूम से और टीचर भी चली गई थी बाहर. और मैंने क्या किया, वो अमीर लड़के के पेंसिल बॉक्स लिया और वो गरीब लड़का, उसका नाम था आयन, मुस्लिम था, उसके डेस्क पे रख दिया मैंने. तो रिसेस के बाद सब वापस आ गए क्लास में और जो अमीर लड़का था वो चिल्लाता है किसने मेरा पेंसिल बॉक्स चुराया, Who stole my pencil box? तो अब टीचर को भी काफ़ी, वो अमीर था इतना, तो she also got worried. तो उसने सबको खड़ा कर दिया, हमें सब खड़े हो गए. तो one by one we went and said, did you steal the pencil box? No. Did you steal? तो जब आयन की बारी आई तो उसने पेंसिल बॉक्स देखा है तो कहता है कि भाई हाँ मेरे डेस्क पे पेंसिल बॉक्स है, ये मेरा नहीं है, पर मैंने नहीं चुराया. तो टीचर ने तो उसको बिलीव नहीं किया. तो मेरी बारी आई. तो अब उस वक्त जो मैंने किया था, शायद मैं सोशलिस्ट था बचपन से, पता नहीं, but there was some redistributive characteristic. I showed some good quality for equality, but I kept quiet. मैं कुछ नहीं बोला, फ्रीज हो गया. जैसे टेम्पररी इंसैनिटी कहते हैं ना, टेम्पररीली यू गो इनसेन. डर, शायद डर हो मुझे.
उसके बाद फिर आयन को उसने सामने बुलाया टीचर ने और उसको पनिशमेंट मिलने वाली थी, तो उसने फिर मेरी तरफ देखा और उसने कहा, मैंने नहीं किया, तुम्हें पता है मैंने नहीं किया, बताओ ना। तो मैं चुप रहा। ये थी, मुझे अभी तक I get nightmares of this incident. And I still don't know what happened. But this was in March 1947, this event took place with Iron. अगस्त में आज़ादी मिली हिंदुस्तान को, अगस्त 1947, और पंजाब की पार्टीशन हुई और पार्टीशन में 3 लाख लोग मर गए, किलिंग, एंड आई सॉ ओनली वन किलिंग. हमारी वी रैन फॉर आवर लाइव्स फ्रॉम लाहौर. दिस वाज इन लाहौर. हम जलंधर स्टेशन में पहुंच गए हैं और प्लेटफॉर्म, हमारी ट्रेन जानी है और पता नहीं कोई खास टाइम टेबल पे जा नहीं रही थी ट्रेन, तो हम इंतज़ार कर रहे थे. बट मेरी माता, मेरा पिता, सब भाई बहन वहाँ थे कंपार्टमेंट में. तो ये स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे एक पुलिसमैन था, टॉल, हैंडसम, another Muslim, and he was keeping the peace on the platform. And 2 sick boys came, teenagers, with kirpans, and they stabbed him from the back and he died. My mother immediately shut the window of the train. And I'm less than 5 years old. So but what occurred to me was, as I try and explain what happened, I think in the partition, the whole country, maybe not the whole country, but Punjab had temporary insanity. When people who were neighbors and friends started killing each other. So the temporary insanity that I felt is the same temporary insanity with which I explained what happened at partition. You asked the question about the difficulty of being good. I've given you an example from my latest book about this story, which is a true story. Anybody else would like to put up a question? Yeah, please, please. You may please raise in your places and then you can put up a question too, sir. Yeah, yeah. Guru Shandas ji, I want to compliment you. Sir, Sir, I want to compliment you for your excellent lecture. See, the only question which comes to my mind, I am a retired person. Maybe you are also retired. But all retired persons are not really tired. So what should the people do when they retire? How to make the life useful? What is your concept about that? That is the question of the day. And जो सवाल पूछा है कि भाई रिटायर्ड होके क्या करना चाहिए, क्या कैसी जिंदगी कैसे बिताएं, सारी उम्र काम किया, एसईसीएल कहीं भी विक्स पेपर अब क्या बनाया. So my answer is again goes back to Kamble, that live your life with a sense of purpose. In my own case,
I felt I was in my 40s that I had lost that sense of purpose. And so I took the risk, quit my job at 50, got the retirement benefits because Procter & Gamble knew I wasn't going to go and join a competitor. They gave me early retirement with benefits, and I became a writer. But it is a very risky decision. My wife was very upset by this decision because the salary would not be coming at the end of the month. And so, why did I take such a risky decision in search of the answer to your question? Because even today, I'm 80, but I start my day at 6. I'm pulled from my bedroom like a magnet to my study. I sit down by 6 in the morning on my computer with a cup of tea, and my fingers start hitting the laptop, and in the screen I see words coming, and I'm not there. It's like Sachin Tendulkar. He was not there. Somebody is hitting the keys and some writing is appearing. Now that is because I have a sense of purpose. So, how do you prepare yourself? If you are not lucky like Kamble, who found it in his work, then you can do what I did. Because, I wasn't trained in business. I was trained in philosophy. So if you want to know the story, read this, my autobiography, which I have just written. And what I talk about is that how I joined the company Wix is another story. But the main thing is that I was missing the intellectual life, and my father said to me that, look, you work from Monday to Friday. See, in multinational companies, Saturday, Sunday are holy. You cannot disturb anyone in the company. So he says, you're lucky that nobody is going to go after you on a Saturday. So he said, start doing start a second career, a hobby, hum kehte hain, hobby, but it's really like a second career. So that's how I wore 2 hats, 2 topiyan, Monday to Friday topi, and Saturday, Sunday topi. And Saturday, Sunday topi started with that 6 to 12 routine. And one day, I was 22 years old, tall in my 22, I said to myself, I'm going to write a play, natak likhunga. And then I said to myself, it must have been a morning like this when Shakespeare also started to write Hamlet. So that is how it started. My plays, luckily, it was successful, and it was produced on BBC. I had a play done off-Broadway. So I was lucky. But it gave me the practice and the confidence. When I was 50, I had the confidence to write, and I became a writer. I think you just had an answer to sir. सर आपको उत्तर मिल गया होगा. इन 3 शब्दों में आपका यह है कि engage, enrich and empower. Engage yourself, enrich others, and then empower others to do something. Thank you, sir. We have a question from their side. प्रणाम, मैं रमेश कुमार सिंह, खनी अभियंता. सर्वप्रथम सर आपके उत्कृष्ट आख्यान के लिए हृदय आभार. First, I am thankful to your outstanding speech, sir. Thank you. Sir.
सर, आपने जो एक चरित्र यहाँ प्रस्तुत किया, मिस्टर तामरे, जो एक छोटे से गांव से बम्बई पहुँचते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से डायरेक्टर तक की ऊंचाई हासिल करते हैं, उनमें सब कुछ था। एटीट्यूड, बचपना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सीखने की ललक। बस एक ही ज्ञान की कमी थी, ज्ञान की कमी थी, नॉलेज। उस समय के साथ उन्होंने उसे प्राप्त किया जिसकी ज़रूरत थी। मेरा प्रश्न है सर, ठीक इसका उल्टा, कोई आईआईटी बम्बई से सर्वोत्कृष्ट डिग्री लेकर के, आईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करके एक छोटे से कोलियरी में जाकर के ज्वाइन करता है, उसके पास भी ये सारे गुण हैं सर, बस एक ही अवगुण है, वो ज्ञानी है सर। तो सर वो इस इंडस्ट्री में लीडरशिप कैसे वो रख पाएगा, जहां पर धारणीय विकास की बात होती है और सारी अवधारणाएं टूटती नजर आती हैं? तो उस जगह पे वो कैसे अपने आप को संतुलित करके आगे बढ़ेगा? इस पे अगर आप कुछ कहेंगे सर। थैंक यू सर। आप लोग के बहुत हैं यहाँ who can probably answer this question better. But I go back to what I was saying to you about कामले, कि कामले को सोचो, एक let's forget that he was a person who came from Akola district, in fact from a village in Akola district. So he's everybody, he is universal, और हम सब में potentialities हैं जो कामले में थी। एंड सिर्फ ये फर्क था कि he had that attitude जो आपने अच्छी तरह से समझाया है। So I feel that he is still relevant to the example that you have given. IIT Bombay, IIM Ahmedabad, all that, it's a matter of attitude. अगर attitude हम, ये एक और प्रॉब्लम है, वो है कि जो attitude होती है ना, वो बहुत बचपन में बनती हैं, और जो बाकी स्किल्स वगैरह हम प्राप्त करते हैं, ज्ञान कह रहे थे आप, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो उसके बाद एडल्ट्स बन के करते हैं। तो एटीट्यूड बदलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर बचपन में एटीट्यूड बन जाए तो मुश्किल। लोग, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जैसे बच्चे को माँ होल्ड करती है अपने बाहों में, वो एटीट्यूड्स बन रही हैं उस वक्त। तो अगर बच्चे को सिक्योरिटी मिलती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है कैसा एटीट्यूड वो प्राप्त करेगा, कैसा व्यक्ति बनेगा later. So I'm not sure I have answered your question. But I basically feel that it's a universal story that I have told. Thank you, sir. We have next question from a lady over there. Good morning, sir. Morning. Thank you for presenting us with such an engrossing session. So here, I'm myself Ronti Basu, working for SECL. So I have a bit curious to know, at this age, how you have that razor sharp memory. Any tips, because you can narrate stories from your very early childhood. So I just want to know, I'm just curious to know how you got this memory power. Any tips for us? Okay. That's another good question, because I'm remembering a lot of this, frankly, because I had to write
for my publishers a memoir, an autobiography. So when you when you start remembering for your autobiography, you start reliving your life. And let me give you a secret. Reliving your life is better than living it. Why? Play God. You decide what to remember. You decide. And that it's a little bit like the memory of an incident is better than the incident itself. Because when you're remembering the incident, then you can remember the color of the walls, the carpet, the knob in the door. And you are basically filling that memory with things that you have put into that incident. That is why, आपने शायद सुना होगा, there's a famous Japanese film called Rashomon. Rashomon effect is now a very important in psychology. You read it. कि एक वो फिल्म में एक मर्डर होता है और जो जज 4 विटनेस आते हैं जज के सामने और 4 लोग वही मर्डर डिस्क्राइब कर रहे हैं लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन्स दे रहे हैं और जज कंफ्यूज हो गया है बिल्कुल कि क्या हुआ क्योंकि 4 लोगों ने 4 चीजें देखी और अलग अलग चीजें देखी. Anyway, what I want to tell you is that memory is also an art. And so I suggested to all of you, since you are looking for something to do, sir, I would suggest it to Sri Mathur that write your memoir and you will relive your life. You'll connect the dots of your life. And that will be better than living your life. Anyway, I'm not sure I've answered your question, but I feel that there is a benefit in. There's another question coming up. नमस्कार सर, मैं ए.के. पांडे चीफ मैनेजर हूं और मैं बहुत आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और आपने जो समझाया एक कामले का एग्जाम्पल दे करके मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ. लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, वो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उसमें उसने कामले की एक्टिविटी को आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया और वो कामले का एक्टिविटी इनहेरेंट था और चूँकि आपके साथ वो काम कर रहा था तो आप उसको पकड़ लिए कि ये अच्छा आदमी है, अच्छा काम कर सकता है. वो किसी और के भी साथ करता तो उस आदमी अगर वो क्वालिटी आपके जैसा होता तब वो उसको करता या नहीं करता. यहाँ पर भी जो अधिकारी हैं वो अपने अपने जगह पे वो मैनेजिंग डायरेक्टर ही है, चाहे वो शिफ्ट में हो, चाहे वो सब एरिया में हो, चाहे एरिया में हो, सभी वो मैनेज करते हैं. इसलिए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्शन भी देते हैं. कंपनी के भी हैं, कोल इंडिया के भी हैं. तो कुछ तो इनहेरेंट है कामले जैसा, कुछ को हम लोग बनाना चाहते हैं कि कामले जैसा उसको कैसे बनाया जा सकता है. कुछ बन सकते हैं, कुछ नहीं बन सकते. तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि जो कामले हैं वो तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जो कामले बनने की क्षमता रखते हैं उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे. और मैं चाहूँगा कि इस कंपनी का हर आदमी एक कामले ही बन जाए ताकि कंपनी का सर्वांगीण विकास हो. इसमें आपका क्या सजेशन रहेगा कि मैं चाहूँगा कि हर आदमी, हर एम्प्लॉय यहाँ का कामले बन जाए ताकि कंपनी आगे बढ़े. आपका एक सजेशन चाहिए क्योंकि यहाँ का हर अधिकारी एक मैनेजिंग डायरेक्टर है. Very wise words.
very wise. I compliment you for your wise words. एक क्वालिटी काम्बले में थी, आपने सब सही कहा। मेरा तो ख्याल है कि आई वॉज लकी दैट, मेरी खुशकिस्मत थी कि काम्बले आ गया और मैंने बहुत सा कुछ उससे सीखा और अप्रिशिएट भी किया। और मैंने, लेकिन मेरा ख्याल है काम्बले वुड हैव सक्सीडेड एनीवेयर। उसमें ऐसी इन्फेक्शियस क्वालिटी थी कि वो उसको you couldn't keep him down. He had to rise. And that, I think, is the very important thing. But let me just, you have reminded me of something, because once day my friend Anil Swaroop was telling me that, you know, in the public sector, it's very difficult to reward people for high performance. So I was thinking about this, and what I learned, and I think what your question has triggered this thought in my mind, that people get motivated not just by material rewards, that sometimes the reality that I would smile at Kamble was a reward to him. I mean, he's an assistant security guard, and the managing director smiles at him and appreciates. I appreciated him in public. So even though he couldn't be stopped anyway, it does help, the message I'm giving you, to create Kambles in SCCL. If you have to criticize somebody, criticize them in private. If you want to praise somebody, praise them in public. So that's what they say, that a man will give his life to you for the sake of a ribbon. Our good words, praise, a smile, and it makes the day for another person. Thank you. Just a minute, sir. We have one question over there. GM Finance. नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था सर, कुछ दिन पहले दो बहुत ही रिच बिजनेस फैमिली जिनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। थोड़ा आगे आ सकते हैं, आपकी सुनाई नहीं दे रही आवाज़ अच्छी तरह। हाँ, स्पीक इन द माइक। मैं आ रही सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ। आ रही है? यस, आ रही है। रिसेंट न्यूज़ में अभी देखा था सर, 2 महीने पहले, अभी जस्ट 2 बहुत ही रिच बिजनेस फैमिली टाइकून जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, अच्छा भला रिच फैमिली 74-75 ईयर्स के एज में फ्रॉड करते हैं और जेल चले जाते हैं। तो मेरा ये सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था सर, ऐसा कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है ऐसे लोग को जो कि इस एज में 74-75 ईयर्स के एज में जेल जाने को रेडी हो जाते हैं, और हम लोगों को उससे कैसे दूर रहा जाए सर? I'm not sure I fully understood your question. सर, he has said, उनका कहना है सर कि एक कुछ दिन पहले एक कहानी आई थी जिसमें 74-75 साल के 2 बिजनेसमैन जो टाइकून्स थे,
उनका बहुत अच्छा व्यवसाय था, सब कुछ था, लेकिन वो फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड करके 75 वर्ष की आयु में वो जेल जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ उनको प्रेरित करती है कि वो जेल जाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, और इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? अब समझ आ गई। भाई, दिस इज अ वेरी अनयूजुअल केस। दुनिया में सब किस्म के लोग होते हैं। There are all types of people in the world, and and what motivates people, what drives people sometimes is not rational to us as ordinary thinking aam aadmi can't comprehend something like that. I suppose this is what makes life unusual, unpredictable, and also very rich when things like these happen. I certainly wouldn't want to do what these two guys did. So maybe we'll leave it at that. There's another question there. So this is the last question. Okay. ये आखिरी प्रश्न है आपका। दो अच्छा, आधा आधा। Hello. I would like to first thank Dr. Mishra ji for having invited me here to have the fortune of listening to you. In fact, I'm not designed to be here. By chance I am here. I am a retired IAS officer. You're retired? Retired IAS officer working as an IEM here, right? So I came here on some mission for a few days. Really, I am thankful to you. Last week only I was going through PNG website and found your name. In fact, when SECL Day is celebrated, I thought there will be some Gana Bajana here which is not of my interest. So कल CMD साहब ने बोला था आप आ जाओ, फिर हम चलो हाँ आ जाएंगे। हम सोचा कि it may be in the evening, it may be a Gana Bajana function. Suddenly when I heard your name, Gurcharan Das ji PNG से हैं, I recollected last week only I was going through his website and I was going through your name. So I'm very, very, very delighted to see you and listen to you. The summary of, what I could get from you is, sense of purpose gives you happiness. Sense of purpose of your life gives you happiness. And the success will be derived through calmness, attitude. So I am very, very happy, and I would like to ask a question, not to just really ask, but to keep you on dais for some more time, because I don't want you to leave the dais. I want to hear you for some more time more. The PNG says their achievement in pollutions, GRI reporting are A and B, that ranking, right? Pollutions, yeah, that pollution control, sustainability, GRI reporting. In that, do you have anything to say for SECL? Because this is a polluting industry basically. So in GRI reporting, I don't know whether we are doing it or not. In that line, if you can throw some light on pollution. It may not be it may be out of context. My idea is to listen to you for some more time. Thank you very much. Well, since we are running out of time, and we have one more questioner, I would just say that I live in Delhi, and it's been horrible for the last month in Delhi. You cannot imagine how our life has fallen down. That you can't go out at all. So and then of course it's related, you were talking about history, that it's very important that the employees
in a company which makes certifications. And I know, there is a clean coal technology, and I was asking my protocol officer who met me at the airport yesterday, what about clean coal technology, is it coming to India or not? Anyway, I think the best thing when it comes to pollution, and that is one of the best achievements of this government, is to give LPG gas to village women. It was a very major source of disease, of death in the rural areas. And the fact that a woman in a village, because she cooks, and when you cook with coal or with wood, you have a very high source of pollution that you inhale. And so a lot of the sicknesses, all doctors will tell you, the major source of disease in our country. So I would just say, maybe on a happy note, that this is one of the good things that has been done. And I feel one of the reasons for Modi's popularity is not Hindutva or any of these other things. It's things like this. Last question, sir. Hello. Thank you very much, sir, for your inspiring speech. I am Ashish Adhikari. I was appointed here as a welfare officer trainee in 1985, and I am the very fortunate person to witness this Sthapna Divas. That was the first Sthapna Divas in 1985 November, when I joined here as a WOT welfare officer trainee, and I feel very inspired to come here again. Very few persons are here who must have witnessed the first foundation day. I have just ordered a book, Another Sort of Freedom. I do not know what type of freedom it is, but I think that it is something related to some philosophy of life. Maybe happiness, sadness, something like that. How to lead a stress life, having no stress. I think it may be related to that sort of freedom. Whatever it is, I will get the book on 29th. My question is, sir, happiness, बचपन से ही हम लोग जानते हैं कि दुनिया में सुख और दुख बटा हुआ है. सुख, कौन सुखी है, कौन दुखी है, और अमीरी और गरीबी, रिच एंड पुअर. पूरा दुनिया हम लोग बचपन से और मरते दम तक यही बात सुनते हैं, कौन अमीर है, कौन गरीब है, और कौन सुखी है और कौन दुखी है. सर, माय क्वेश्चन इज दैट कैन अ पर्सन be rich and poor at the same time? Well, I mean, you have in a way given your answer to that question, that yes, of course, look at Kamble, a villager from Akola district, and the day he arrives, we know he is special. Everybody can see it. And he's a happy guy. I don't think he was happier as a director of the company as he was doing his rounds as a security guard. So it's an attitude. If you have the right attitude, you'll be happy. That's why they say happiness is an inside job. Okay, are we done? Sir, we are done. Thank you very much, sir. Thank you, sir. I would just request few more seconds to be there on the stage. मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष प्रबंध निदेशक महोदय आदरणीय डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा साहब से कि सर इतने प्यारे से हमें मोटिवेशन के लिए उन्हें हम एक
टोकन ऑफ लव देकर के उनका सम्मान करना चाहेंगे। और आप सभी सदन से उपस्थित लोगों से निवेदन, कृपया जोरदार ताल से इसका अभिवादन करें। प्लीज एक्सेप्ट दिस स्मॉल टोकन ऑफ लव ऑन बिहाफ ऑफ SCCL ऑन दिस फाउंडेशन डे। It's a proud privilege, sir. Yeah, I'd appreciate if this could be sent to my address because I don't have space. मैं चलते चलते निवेदन कर दूं अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक महोदय से कि हमारे बीच में पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक आदरणीय MP दीक्षित साहब हैं, उनका हम लोग शॉल श्रीफल एवं एक पौधे से स्वागत करें, उनका सम्मान करें। सर, इट्स एन ऑनर यू आर विथ अस। थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी के लिए एक सूचना है, आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था पीछे की गई है। अब हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और दोपहर का कार्यक्रम हमारा ठीक 2 बजे इसी ग्राउंड में, इसी पेंडॉल में प्रारंभ होगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।